Students, myself Ajit Kumar Chaube. Today I am going to discuss the topic life process, class 10 biology. हमारे शरीर में अनेक जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि संपन्न होते रहती है। इन प्रक्रियाओं के संबंध में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सामान्य जानकारी प्राप्त की है। ये प्रक्रियाएं जैव शरीर के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हम लोग पहला टॉपिक न्यूट्रिशन को आज पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins and minerals, water from surrounding and their utilization for normal growth and development of an organism is called nutrition. भोजन के रूप में जो भी पोषाहार न्यूट्रिएंट्स हम प्राप्त करते हैं उनका पाचन, अवशोषण, तत्पश्चात उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग ही हम सभी जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए करते हैं। अतः इन जैव प्रक्रियाओं में सभी के संपन्न होने के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का ग्रोथ और विकास संभव होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे। दो प्रकार के न्यूट्रिशन मुख्यतः होते हैं। पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग पहले ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को विस्तृत रूप से जानेंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन। सजीवों का वो वर्ग जो अपना पोषण स्वयं करता है, इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। All green plants have marvelous power which can convert solar radiant energy into organic food energy. This power is only found among plants, so they are called producer of food. They make food from inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight in the form of a carbohydrate glucose. Now it can be defined in conclusive word. All green plants make their food by the process of photosynthesis in presence of chlorophyll and sunlight using raw material carbon dioxide and water. They are called autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. Chemical equation is summarized as follows: 6CO2 plus 12H2O, chlorophyll, sunlight, and product is glucose, oxygen and water. Oxygen and water are released through stomata as byproduct. Main product is glucose, whose n number, that n is a large number. More glucose molecule aggregate together, combine together to form polymer starch, a carbohydrate, which is stored in leaf. From leaf, it is transported in different parts for further storage. Second mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Except all green plants which are producer, they make food by themselves by use of inorganic material, carbon dioxide and water. But all animals and non-green plants like bacteria and fungi, we all are familiar with fungi, mushroom, that is gobarchatta. We all know they are non-green plant and they have not capability to make food by process of photosynthesis due to lack of chlorophyll
they can't convert solar radiant energy into food energy. Thus, they depend directly or indirectly on food produced by green plants. Their mode of nutrition can be summarized as conclusive remark. Except green plants, all animals and non-green plants like bacteria, fungi depend for food on green plants directly or indirectly. They are called heterotrophs, and this mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. Further, heterotrophic mode of nutrition is divided into three parts. Saprophytic nutrition. Now, bacteria, fungi, they are non-green. We all know they are non-green plant. They grow on dead and decaying remains. सड़ते गलते हुए जंतु या पादप के अवशेष से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. इनके न्यूट्रिएंट बाहर से अंदर की ओर डिफ्यूजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और जिससे इनका वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. इसको समराइज वे में हम लोग डेफिनेशन में कह सकते हैं. ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट रिमेन्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन is called saprophytic nutrition. Example, bacteria and fungi. They can grow even on rotting wood and decaying dung. Hence, they are also called saprophytes. Other mode of nutrition is parasitic mode of nutrition. This is a special type of nutrition in which there is mutual relation between two organisms, in which one organism is benefited, that is, it gets nutrient from the other, but the animal which supply nutrient is harmed. As for example, Cuscuta plant, which grow as climber over any angiospermic plant, it penetrates its knob-like hysteria in a stem of independent plant, autotrophic green plant, like any angiospermic plant, and get nutrient from their tissue. Thus, it will be continued in next video. That's all. Okay.